Hello, good morning, everyone. So, today we will go ahead and we will wrap up this chapter one of macroeconomics. But उससे पहले, I want to go ahead and I want to write the summary of what we studied yesterday. इस पे we will write an answer based on emergence of macroeconomics. ठीक है, मेरे साथ लिखिए एक बारी. Then we will proceed and we will wrap up the chapter. Write it with me, beta. Open a new paper, new sheet खोलो. Macroeconomics emerged as a distinct branch of economics with the publication of the general theory of employment, interest, and income, 1936, by John Maynard Keynes. याद आया? Yesterday we studied this. तो हमारी जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कब आई थी? 1936 में, जब जॉन मैनार्ड केन व्हेन ही ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज ग्रेट डिप्रेशन, कि उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी, राइट? व्हेन ही ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज fall in the output level in the economy, right? जब उन्होंने ये सब देखा, that is when there was emergence of macroeconomics. कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने? बहुत फेमस बुक लिखी थी. The name of the book was General Theory of Employment, Interest and Income. In which year? 1936. किसने लिखी थी? Who introduced macroeconomics? John Maynard Keynes. ठीक है, so write down. Prior to Keynes, economic thinking was dominated by classical tradition, which assumed economies naturally operate at full employment. Anyone willing to work will find a job. And productive capacity would be fully utilized. एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. कल मैंने एक वर्ड दिया था बेटा, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. So in yesterday's class, we said that there is no involuntary unemployment. माने हमने बोला था anyone who is willing to work, जो भी काम ढूंढ रहा है, जो भी काम करना चाहता है, उन सबके पास काम है. Anyone willing to work has work, उनके पास काम है.
अब केन्स ने बोला ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। हाँ, केन्स क्या बोलते हैं? केन्स ने बोला दैट वी सी दैट देयर कैन बी प्रेजेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमें ये दिख रहा है दैट पीपल कैन बी अनएम्प्लॉयड, लोगों के पास नौकरी नहीं होगी। सो अनलाइक द क्लासिकल्स, एडम स्मिथ जिन्होंने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, केन सेड दैट नो, इट इज पॉसिबल दैट पीपल मे नॉट हैव वर्क, लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। राइट, और ये कैसे उनको पता चला? बिकॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन we saw that there was high unemployment and low output in many countries. So write down this belief was severely challenged, better, severely challenged by the Great Depression of 1929 and the following years. Economies in Europe and North America experienced massive decline in output and employment. Demand collapsed. Factories remained idle. And large-scale unemployment emerged. तो हमने क्या देखा? हमने देखा that during the period of 1929 there was great depression in the economy. ग्रेट डिप्रेशन में कोई भी डिमांड कर ही नहीं रहा था, डिमांड सीवियरली गिरना गिरना शुरू हो गई। नाउ व्हेन डिमांड स्टार्टेड फॉलिंग, तो क्योंकि नो वन इज डिमांडिंग, फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन बंद कर दी। व्हेन फैक्ट्रीज स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, तो उन्होंने जॉब देनी बंद कर दी। when jobs started falling, तो automatically there was massive decline in output and employment. output भी गिरना शुरू हो गया, employment भी गिरनी शुरू हो गई। we saw that demand fall, factories was idle, कुछ production ही नहीं हो रहा था, and there was large scale unemployment. अगर हम सिर्फ यूएस के डेटा की बात करें, if I talk only about the data of US, right, then unemployment increased from 3% in 1929 to 25% by 1933. तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो गया, एंड आउटपुट डिक्रीज्ड बाय 1/3। राइट, नो वन वॉज डिमांडिंग, डिमांड नहीं हो रही थी तो प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी तो प्रोडक्शन गिर रही थी, आउटपुट वॉज डिक्लाइनिंग। सो ओनली इन यूएस इटसेल्फ, ओनली व्हेन वी कंपेयर वन कंट्री, एक कंट्री के अंदर अंदर ही हमें ये पता चल जाता है दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज हाई। राइट, अब जब ऐसा होना शुरू हो गया दैट पीपल वर नॉट एम्प्लॉयड, तो क्लासिकल्स तो फेल हो गए। And this is when economists started reconsidering how the economies function. So write down these unprecedented conditions
forced economists to reconsider how economies function. In particular, the persistence of long-term unemployment could no longer be explained by classical theory. तो अब क्या हुआ कि अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्लासिकल थ्योरी को हम कैसे यूज करें, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ने कहा था कि एवरीवन लुकिंग फॉर जॉब विल गेट अ जॉब, बट ऐसा हो नहीं रहा था. पीपल हु वर लुकिंग फॉर जॉब वर नॉट गेटिंग अ जॉब. देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. तो अब इस चीज को हम कैसे समझाएं? हाउ वी एक्सप्लेन दिस? दिस वॉज नॉट बिकमिंग वेरी क्लियर इन आवर माइंड. ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही थी, right? And that is when Keynes came into picture. So write down. Keynes responded by analyzing economy as a whole. तो कल मैंने आपको बताया था ना कि अगर क्लासिकल पूरे फॉरेस्ट में एक ट्री को देख रहे थे, तो केन्स ने बोला डोंट लुक एट द ट्री, लुक एट द फॉरेस्ट एज अ होल. है ना? So Keynes responded by saying that we need to look at economy as a whole, focusing on aggregate demand, and interdependence between different sectors. Right? तो उन्होंने बोला कि सारे सेक्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है, फर्म्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, और हर एक को अलग अलग पढ़ना गलत होगा. मैंने आपको कल बॉडी का भी एग्जांपल दिया था. बीपी, शुगर, थायराइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ईच अदर. आप यूजुअली देखोगे कि जिस इंसान को बीपी प्रॉब्लम होती है उसे शुगर खुद होना शुरू हो जाता है. सो वी कैन नॉट ट्रीट जस्ट वन थिंग एट अ टाइम. We have to look at the interdependence in the body, right? और इसी चीज को बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसी की ही स्टार्टिंग हुई मैक्रो इकोनॉमिक्स की. सो दिस होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल, laid the foundation of macroeconomics as a separate field of study field of study concerned with output, employment, and overall economic stability. एंड ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो ये हमने कल पढ़ा था कि हाउ देयर वाज इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. फिर हमने पढ़ा कि देयर इज एन एंटरप्रेन्योर
हु इज डूइंग सम प्रोडक्शन, हाँ, और जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज बेसिकली गोइंग अहेड एंड गेटिंग स्प्लिट। हमें कैपिटल को इंटरेस्ट देना है, लैंड ओनर को रेंट देना है, लेबर को वेजेस देने हैं, एंड रिमेनिंग पार्ट वी कैन कीप विद आवर सेल्फ एज प्रॉफिट। ये बात हमने कल पढ़ी थी। नाउ टुडे आई वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर एंड आई वांट टू रीड आउट दीज पैराग्राफ्स, फिर इसका समरी लिख के वी विल रैप अप द चैप्टर। ठीक है, आइए लेट्स सी टुगेदर। In both the developed and developing countries, apart from private capitalist sector, there is the institution of the state. तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि किसी भी जगह पे जब हम जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर तो है बट स्टेट भी है। स्टेट माने क्या हो गया? स्टेट माने वो जो उस जगह के लॉज बनाए, जो उस जगह के रूल्स बनाए, जो उस जगह में इंश्योर करे कि लोगों को जस्टिस मिले, जो इस जगह पे लोगों पे टैक्सेस इंपोज करे, जो अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करे। स्टेट माने वो जो स्कूल, कॉलेज, फ्लाईओवर, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स बनाए, तो वो हो जाता है हमारा स्टेट। The state in many instances undertakes production apart from imposing tax, spending money on building public infrastructure, running school, college, providing health service. ये बात समझ में आती है कि स्टेट क्या है? These economic functions of the state have to be taken into account what we describe the economy. For convenience, we shall use the term government to denote the state. तो state और government का मतलब एक ही है। आप स्टेट बोल लो या गवर्नमेंट बोल लो, एक ही बात है, बट काम क्या है इसका? काम है टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ द पीपल। लोगों के वेलबींग को, लोगों के वेलफेयर को इंश्योर करना ही स्टेट का या गवर्नमेंट का काम है। तो एक हमने पढ़ा कि देयर इज एन एंटरप्रेन्योर, ये पूरा हमारा फर्म साइड हो गई बेटा, प्रोडक्शन साइड हो गई। देन वी स्टडीड दैट देयर इज अ स्टेट, देन वी स्टडीड कि एक स्टेट है या एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर। अब आता है वन थर्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और वो थर्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या है? द थर्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज नथिंग बट योर हाउस होल्ड सेक्टर। ये हमारा हो जाता है हाउस होल्ड सेक्टर। सो अपार्ट फ्रॉम फर्म एंड गवर्नमेंट, देयर इज अनदर मेजर सेक्टर इन एन इकोनॉमी विच इज कॉल्ड एज द household sector. By household, we mean single individual who takes decision relating to own consumption or group of individual for whom decision relating to consumption are jointly undertaken. तो या तो मैं अकेले बता दूं कि मुझे कितना कंज्यूम करना है, ये पैसा जो भी मैं अर्न कर रही हूँ उसको कैसे यूज करना है, या कुछ लोग मिलके डिसाइड कर लें कि हमें कैसे कंज्यूम करना है। इट कैन बी अ जॉइंट डिसीजन, इट कैन बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। Household also save and pay tax. How do they get the money for these activities? We must remember that the household consists of people. These people work in firm as worker and earn wages. तो ये जो हमारे लेबरर्स थे, यही तो अपना घर चला रहे हैं। दे आर बिकमिंग द हाउस होल्ड। सो फॉर कंजम्पशन, कुछ भी खाने के लिए उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है? थ्रू दिस वेजेस, थ्रू दिस वेजेस। इज इट क्लियर? दे आर द वंस हु वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अर्न सैलरी। यही हाउस होल्डर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जा रहे हैं, जो वहां से पैसा कमा रहे हैं। और दे आर द ओनर ऑफ फर्म एंड अर्न प्रॉफिट। यही हाउस होल्ड है, यही तो। ये देखो ध्यान से समझो, ये जो कैपिटलिस्ट है ये भी तो अपना घर चला रहा होगा, जो लैंड ओनर है वो भी अपना घर चला रहा होगा, जो ये एंटरप्रेन्योर है वो भी अपना घर चला रहा होगा। तो इन द बैकग्राउंड आप खुद सोचो ना, इफ आई गो एंड आई वर्क इन अ फर्म, तो जो मेरा बॉस है वो भी तो अपना घर चला रहा है, जो उनका बॉस है वो भी अपना घर चला रहा है। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाके काम करती हूँ तो जो मिनिस्टर के लिए मैं काम करूंगी वो भी अपना घर चला रहे हैं। सो एवरी वन इज अ हाउस होल्ड। हाँ, फ्रॉम द प्लेस फ्रॉम वेयर दे विल गेट द मनी विल डिफर। उन्हें कहां से वो पैसा मिल रहा है, फ्रॉम वेयर दे आर अर्निंग द मनी,
दैट कैन बी डिफरेंट, वो अलग हो सकता है, बट एवरीवन इज रनिंग अ हाउस होल्ड, सब घर चला रहे हैं. इज इट मेकिंग सेंस? Moreover, they can also earn rent by leasing or earn interest by lending capital. ये बात समझ में आती है? तो ये सभी हाउस है साथ में. So far, we have described the major players in domestic economy, but all countries of the world are also engaged in external trade. तो एक हर इकोनॉमी में बेटा एक सेक्टर होता है जिसको बोला जाता है एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. एक्सटर्नल सेक्टर क्या है? दैट सेक्टर जो इंडिया के बाहर है, जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो. तो जब हम इंडिया के बाहर गुड्स सेल करते हैं, सपोज इंडिया इज सेलिंग टू यूएसए, सेलिंग टू यूएसए सपोज कॉटन या शर्ट या व्हीट या राइस, देन इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट. व्हेन इंडिया इज बाइंग फ्रॉम यूएस, सपोज आईफोन, then it is called import. तो when you sell to the other country, जब आप बेचते हो, that is called your export. The domestic country may sell good to the rest of the world, these are called as export. When you buy, the economy may also buy good from the rest of world, these are called as import. एक हो गया export, एक हो गया import. Beside export and import, the rest of the world affects the domestic economy and other ways as well. तो जब हम ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, सो दिस इज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये किसमें हो गया बेटा? दीज आर इन गुड्स एंड सर्विसेज. बट गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा भी यू कैन डील विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कैसे? बाय डीलिंग इन कैपिटल. माने अगर कोई यूएस की कंपनी इंडिया में आके अपनी कंपनी खोल ले या इंडिया की किसी कंपनी में लोन दे, तो दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल मूवमेंट. Capital from foreign countries may flow in the domestic country, or the domestic country may be exporting capital to the foreign country. बात समझ में आई? तो दिस कंप्लीट्स दिस चैप्टर. तो लास्ट पार्ट का एक बारी समरी लिख लेते हैं, है ना? दैट विल फिनिश ऑफ योर नोट्स ऑल्सो. लिख लो बेटा मेरे से बैठ के. Then we will go ahead and we will do some question answer series. Okay, open your notebooks and write it with me. लिखो. We study macroeconomics in a specific historical and institutional context. That of capitalist economy. In such an economy, production is carried out by capitalist enterprises which are controlled by entrepreneurs.
who take decision and bear risk. ठीक है, तो देखो हमने ही बात की थी कि देर आर थ्री काइंड ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। बट हम जिस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, माने वो मार्केट डिसाइड करती है कितना प्रोड्यूस करना है, किस चीज को प्रोड्यूस करना है, कितना सेल करना है, गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। और इसमें हम बोल रहे हैं दैट देयर इज प्रोडक्शन विच इज कैरिड आउट बाय कैपिटल entrepreneurs, इट्स कंट्रोल्ड बाय entrepreneurs। ठीक है, entrepreneurs डिसाइड करेंगे क्या और कितना प्रोड्यूस करना है। सो राइट डाउन, आफ्टर प्रोड्यूसिंग goods and services, firms sell output in market and earn revenue, right, which is distributed as rent to land, interest to capital, and wage to labor. So we saw this, that the total revenue is in four parts. It gets rent to the land, interest to the capitalist, wage to the labor, and profit to the entrepreneur. So the residual income is profit, a major part of which is often reinvested to expand productive capacity. This constitutes investment expenditure. ये भी हमने पढ़ा था कल, दैट जो भी एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमा रहा है उसका बहुत सारा पार्ट वो री इन्वेस्ट कर रहा है, वो वापस उससे कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने वाला है। हाँ, उससे वो वापस मशीन खरीद लेगा, कुछ कर लेगा ताकि उसकी प्रोडक्शन फ्यूचर में बढ़ पाए। और इसी को वी गो अहेड एंड वी कॉल दैट एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट? ओके, सो राइट डाउन, अ कैपिटलिस्ट has three core features. A, private ownership of means of production. बेटा ये प्राइवेट है, पीवीटी, ठीक है। बी, प्रोडक्शन फॉर मार्केट, माने खुद की कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लोगों के भले के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, टू सेल इट इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट ही इज प्रोड्यूसिंग। थर्ड, वेज लेबर, राइट? वेज लेबर मीन्स यू आर बाइंग लेबर, आप लोगों की सर्विसेज ले रहे हो और उनको वेजेस दे रहे हो, राइट? हिस्टोरिकली fully emerged
capitalist economies have been seen in last 3 to 4 centuries. तो देखा गया है कि ये बहुत पुराना चीज नहीं है. हाँ, दिस हैज बीन सीन वेरी रीसेंट फिनोमेना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी 300-400 साल, एज आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो, इट्स नथिंग. हम AD BC इन सब का बात करते हैं, राइट? सो दिस इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पीरियड जब से हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज देखने में आई हैं. ओके, सो हिस्टोरिकली दे हैव बीन इमर्ज्ड इन ओनली 3 to 4 years and are relatively small number of countries. Right? In contrast, many underdeveloped and tribal societies rely on family-based production, limited wage hour, subsistence output, or communal ownership of land. राइट, तो अगर हम अभी भी बहुत सारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज देखें, वहां पे फैमिली बेस्ड प्रोडक्शन है, माने आप अपनी फैमिली के लिए ही प्रोड्यूस कर रहे हो. वेज लेबर लिमिटेड है, इतने लेबर नहीं मिलेंगे जो वेजेस के लिए बाहर जाके काम कर रहे हैं. सबसिस्टेंस आउटपुट है, माने सिर्फ उतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे खुद सरवाइव कर पाए, खुद जी पाए. कम्युनल ओनरशिप ऑफ लैंड है, माने लैंड किसी एक इंसान के पास नहीं है, पूरी कम्युनिटी के पास है. Right? So, context where capitalist macroeconomics is less applicable. तो इन सब चीजों की वजह से कैपिटलिस्ट मैक्रोइकोनॉमिक्स वहां पे कम एप्लीकेबल है. However, even developing countries contain significant capitalist production units referred to as firm, which operate on profit motive under uncertainty. तो ये बात समझो थोड़ी सी. देखो, ये बात तो क्लियर है कि पूरी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट नहीं हो सकती. हम्म, पर स्टिल इकोनॉमी के अंदर जाए तो एक पर्टिकुलर फर्म कैपिटलिस्ट हो सकता है. फर्म मतलब कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है. मैं भी एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट हो सकती हूँ. अगर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूँ जहां पे आई एम टेकिंग सम फीस, आई मे बी प्रॉफिट मेकिंग. मेरा भी प्रॉफिट मोटिव हो सकता है. और मेरा मोटिव ये भी हो सकता है दैट आई टीच फॉर फ्री एंड
आई वॉन्ट टू जस्ट डू गुड फॉर द स्टूडेंट्स, तो क्या वो प्रॉफिट मोटिव रहेगा या सोशलिस्ट मोटिव रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि वेदर यू आर कैपिटलिस्ट और नॉट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एम प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है। सो राइट डाउन अलोंग साइड फर्म, द स्टेट, स्टेट को ही हमने क्या बोल दिया बेटा, गवर्नमेंट, GOVT डॉट करके मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, प्लेज अ क्रूशियल रोल, राइट, बियॉन्ड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, government levies taxes, give subsidies, spends on public infrastructure, build school, education, health, सब करता है ना गवर्नमेंट, एक्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है गवर्नमेंट की फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। फिर आता है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। दिस इज अनदर मेजर कंपोनेंट। सो हाउस होल्ड्स मेक डिसीजन about consumption, saving, and tax payment. Their income comes from wages, salary, profit, interest, रेंट। तो वेज चाहे वो फर्म के पास जाके काम करे या गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट में करेंगे तो उसको हम सैलरी बोल देते हैं, फर्म्स के पास करेंगे तो वेज बोलेंगे। चाहे वो अपना लैंड रेंट पे दे रहे हो, रेंट अर्न करके भी अपना घर चला सकते हैं, चाहे वो अपना मनी लोन पे दे रहे हो, इंटरेस्ट से घर चला सकते हैं, चाहे वो ऑन्टरप्रेन्योर हो, माने अपने फर्म को रन कर रहे हो, प्रॉफिट से भी घर चल सकता है। सो हाउस होल्ड कैन प्रोवाइड लेबर टू फर्म, it can provide labor to the government, and it can also be an entrepreneur, it can be a capitalist, but in सबके through this money household क्या क्या रहे हैं, they are generating demand for goods and service, वो इन पैसों से goods and services की डिमांड कर रहे हैं, और उस डिमांड से ही मार्केट चल रही है, क्योंकि डिमांड साइड तो हाउस होल्ड से ही आ रही है ना, राइट, right? So they are generating the demand for goods and services, which is leading to the functioning of the market. Finally, economy also interacts with external sector. ठीक है, when you sell good and services to ROW, rest of the world, उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मैंने ROW लिखा है, हाँ, उसको बोल देते हैं एक्सपोर्ट। एंड व्हेन यू बाय goods and services from other countries, rest of the world, उसको बेटा हम इंपोर्ट बोल देते हैं। एंड एक थर्ड चीज क्या होती है, कैपिटल फ्लोज या कैपिटल मूवमेंट्स, ठीक है, वेयर कैपिटल कैन फ्लो अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, माने मूवमेंट ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इज इट क्लियर? तो इसके साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का इनिशियल फ्रेमवर्क हमारा कंप्लीट होता है।
we have gone ahead and we have completed chapter 1 of macroeconomics completely, along with proper notes of chapter 1. I hope all of you have written down these notes with me एक copy के अंदर, ठीक है? And now in the next class we will first take few questions of chapter 1, then we will start with chapter 2. Okay beta, thank you.